Next question, who are the earliest migrants from the Europe to South America? Europe to South America earliest migrants kiye achante? So the correct answer is Spaniards. Next question को जिबा, disqualification on the grounds of defection for a member of the parliament will not apply. केबे apply हबनी? In case of split in the original political party to which he is elected, if he is voluntarily giving up his membership of the political party, if he abstains from voting in the house contrary to direction of political party, if a nominated member of the house joins the political party after 6 months. हाँ तो B, C, D तीनटा जा कोई criteria for disqualification, but A is not a ground for disqualification in case of split of the original political party in which he is elected. तो A कारण रू C defection रे आसीबे नाही. Next को जिबा, when was the first synchronous census of Indian population held? सबुठु first synchronous census है 1881 and during that time the tenure was by Lord Dufferin. Next question को जिबा, Varanasi, the cultural capital of India, is mainly associated with dash. Varanasi is associated with Shaivism, यानी कि शिव following of the Shiv. Next one, which among the following shall not be considered as an adequate ground for issue of proclamation of national emergency? National emergency रो proclamation रे कोटा adequate ground रहिबो नहीं. War, external aggression, armed rebellion, internal disturbances. So national emergency is given in the grounds of war, external aggression या armed rebellion. सो आगु इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थिला किंतु 44th अमेंडमेंट पर या चेंज कर दिया गला कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी लागू होबो नै से नाटा को चेंज करिकिना आर्म्ड रिबेलियन आना गला. तो डी हबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन यूएसए इन विच रिगार्ड? So the options are in its role as the guardian of the constitution, in its advisory role, in its role as the supreme authority in the judicial field in the country, in the writ jurisdiction. So the correct answer is Supreme Court India रे तांकर गोटे advisory role थाए किंतु ए advisory role टा USA रे न थाए. So this is the correct answer. Advisory role. Next question को जीवा, which of the following items comes under the concurrent list of the Indian Constitution? हाँ तो कॉन्करेंट लिस्ट रे कोटा से इंटरस्टेट रिवर्स आसीबो, या तो फिर ट्रेड यूनियन आसीबो, या तो फिर सिटीजनशिप आसीबो, या तो फिर लोकल गवर्नमेंट आसीबो. सो द आंसर इज द ट्रेड यूनियन आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. ट्रेड यूनियन लेबर ये सब जाक. तापरे द डीपीएसपी ऑफ अ स्टेट, डीपीएसपी माने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश. डीपीएसपी निया जायछि आयरलैंड रू. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, सो ये अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को कह जाए कि ना यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड ये चार्टा ऑप्शंस रे देछि. अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग द यूनिट्स रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ देयर एग्जिस्टिंग नंबर. द फेडरल गवर्नमेंट हैज नो control over the constitution of the units. 50,000 citizens can request a constitution amendment. Legislature of 2/3 of the unit apply for the amendment. Units have no power to initiate constitutional amendment. So यार आंसर कौन हबो? So the correct answer is 4532. यानी कि इंडिया रे जो यूनिट्स अच्छे तांकर किसी पावर न था टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो इंडिया रे हबो 5. सिमिलरली यूएसए पाई 2/3 यूनिट्स दरकार थाए. तापरे Switzerland 50,000 citizen can initiate the constitution amendment. Australia the federal government has no control over the constitution of the units. Okay, so this was the discussion of 2016 paper. Next video रे further हमें discussion को आपको बढ़ेगा. Thank you everybody, have a nice day. If you wish to subscribe to Unacademy, use this referral code YAGYA Live for additional 10% discount.